Hi, we are at Umravan. So this site actually we are giving water from a open well to one of the chowkis and 3 water bodies. The forest department has made actually a chowki inside. We are in right now in Madla range of Panna Tiger Reserve. So they have made a chowki out here, and also they have made 2 saucers, and there is a natural water body out here. This is a completely dry area out here. There is no water available in summers out here. So what we are going to do is we are going to fill the saucers from here and give water to the camp also. Right now the camps are also being supplied water through tankers, and the inside camps also, they come to the outside camp to take water. So we'll be actually giving water to the camp also inside, so they'll be having water inside, and they'll be able to get water for the wildlife and also for the camps out here. ये परिक्षेत्र मरला की उमरावन बीट है, जहाँ पर पानी की समस्या थी, और ये अपना यह सोलर पंप चालू हो गया है, जिसमें कैंप उमरावन के लिए विधिवत रूप से पानी आने लगा है। और जो जानवरों की भी समस्या थी यहाँ पर जो बीट पे, तो 2 सौसरों में पानी पहुँचाया गया है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर, और जो सुचारू रूप से चालू हो गया है पंप, और पानी की समस्या जानवरों की कुछ हल हो गई। गर्मियों में यहाँ तो पानी बिल्कुल भी, क्योंकि ड्राई एरिया, कहीं ऊपर पानी रहता नहीं है, इसके लगने से जानवरों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो गई है। यहाँ टैंकर से पानी आता था, जो मरला से आता था, यहाँ से कम 45 किलोमीटर दूर से। अब पानी की व्यवस्था होने के कारण टैंकर का खर्च और उस समय दोनों ही बचेंगे। मेरा नाम भोले सिंह, सुरक्षा श्रमिक, उमरावन कैंप। मेरे यहाँ पानी पीने की थोड़ा समस्या थी, इसलिए सोलर पंप लग गया है, तो पानी की समस्या यहाँ सॉल्व हो गई और जानवरों के लिए भी थोड़ा बहुत सॉल्व हो गई। So hi, we are extremely thankful to Astral Foundation here for donating a solar pump at Umravan in Madla range in Panna Tiger Reserve. This has helped a chowki here
and couple of water bodies out here and another watchtower as well, and this will give water to a lot of animals and the people out here, and will help the entire wildlife ecosystem out here. Thank you so much, Astral Foundation.